Namaskar, good evening viewers. You are watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will take a look at all that transpired in the two houses of Lok Sabha and Rajya Sabha on Monday. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. Parliament discusses provisions made in the Union Budget 2025-26. General discussion on the budget takes place in both the houses of Parliament. Ruling party describes the budget as exceptional, meeting the aspirations of the middle class and poorer section. Opposition accuses the budget of ignoring the interests of the common man. Finance Minister Nirmala Sitharaman says action will be taken in case there are violations of well-laid-down processes for auctioning of gold by banks and NBFCs. Response during question hour in the Lok Sabha stresses that non-banking financial companies and scheduled commercial banks guided by similar rules. And the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill 2025 introduced in the Rajya Sabha. The bill seeks to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to aircraft equipment, signed in 2001. The news now in detail. The proceedings in the Lok Sabha began with the question hour. On Mondays, questions related to the Ministries of Corporate Affairs, Culture, Education, Environment, Forests and Climate Change, Finance, Labour and Employment, Skill Development and Entrepreneurship, Tourism and the Ministry of Youth Affairs and Sports are scheduled for oral answers. Within the stipulated time, questions that could be asked related to funds allocated for the Skill Development Programme, gold loan, NPAs in banks and NBFCs, objectives of the Skill India Digital Initiative, implementation of Swadesh Darshan scheme, Credit Guarantee Fund for Education Loan and upgradation of ESI Hospital in Tirunelveli. Replying to a question related to gold loan NPAs in banks and NBFCs, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that non-banking financial companies and scheduled commercial banks are guided by similar rules as far as gold loan NPAs and auction of gold are concerned. Non-banking financial companies and scheduled commercial banks, all of them are guided by similar rules. And as the Minister of State explained, there is a process of giving enough number of notices to the bank account holder to say your servicing is not up to the mark, and that in the eventuality of you not coming back to pay, we will be forced to go on an auction. Now, even for going on an auction, there are very well laid out procedure. It cannot be done outside of the district. It cannot be done without the presence of the person. It cannot be done unless the valuation is done. It is also not done at a random rate. There is a benchmark rate the NBFC has to fix, and that will not be lower than 80%, I think, over the last 3 or 4 months of gold rate. And that gold rate is not determined by the NBFC, it is determined by the Bombay Bullion Association, I think, who gives out the rate every day, and therefore it cannot be lower than that rate. So these are well laid, tight processes. I would rather have more information from the Honourable MP if these processes are violated. And if they are violated, indeed, it's for us to act on. But the processes are very much in detailed fashion written down and followed by the banks. And the reserve price is something which they have to declare well in time. So I think if there are specific instances where the Honourable MP thinks these laid out norms are violated, I'm quite willing to take the details and act on it. The Finance Minister, on a further supplementary on the same question, said that the demand for gold in India is still going up. She said that RBI too is buying gold to maintain adequate reserves. She, however, reserved any comment as to whether the government is buying gold to strengthen an alternative international settlement mechanism other than the US dollar.
the demand for gold in India has not come down. On the contrary, it's going up. And I would think it is very typical of India, particularly for households or small businesses, and it is normally said women, but general households also and women also, to invest in gold because they think it's far more secure and far more liquid, and therefore as an asset class, we see that sustained interest in it by the households and small businesses as much as women of India. But beyond that, of course, the Reserve Bank also is buying gold to make sure that it has adequate reserves of gold and not just a basket of currencies. And in that, one of the currency which predominantly has been held by the Reserve Bank has been the US dollar. But we also have the reserve currencies in denominations of different denominations of other currencies as well. But the gold is also kept in the Reserve Bank, and gold is also being bought by Reserve Bank. But beyond that, as regards an international currency or potential currency, there's not much for me to comment at this stage. Responding to a question related to Credit Guarantee Fund for Education Loan, Education Minister Dharmendra Pradhan said that the government, apart from credit guarantee, runs several other schemes that cater to such needs. भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कई प्रकार की योजना चलाती है। उसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम एक है। उसके अलावा सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी ये भी एक योजना है। मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप भी एक योजना है, और जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए भी एक अलग से स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी लागू होती है। जो हायर अमाउंट की लोन के बारे में आदरणीय सदस्य ने पूछा, अभी मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को। पिछले ही बजट में उन्होंने उसी प्रकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जैसे एक नई महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया है, जिसमें कोई प्रकार की कोलैटरल गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ये एक नया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें गाइडलाइन भी अभी भारत सरकार ने सामने रखा है। कोलैटरल फ्री रहेगा, गारंटी फॉर फ्री एजुकेशन लोन रहेगा। ये इसमें 8 लाख तक जिनकी फैमिली इनकम है उनको भी पहले कई प्रकार के लोन में थोड़ा सीमित था, 4.5 लाख की सीमा में दिया जाता था। इसमें 8 लाख तक फैमिली जिनकी इनकम है उनको दिया जाता है। इनकी 10 लाख तक, अभी तक 7.5 लाख का है, 10 लाख तक लोन में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की भी गारंटी कही गई है। इसमें इस बार बजट आउटले में आने वाले 24-25 से लेकर 30-31 तक भारत सरकार की वित्त विभाग ने 3600 करोड़ रुपया की एक स्पेशल फंड भी बनाई है। धीरे धीरे भारत सरकार की प्रचेष्टा रही है उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा हमारे देश में ही मिले, और उसमें से इसकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना को भी लागू किया गया। After the question hour, important papers were laid on the table of the Lok Sabha. The papers laid on Monday concern the Ministry of Rural Development, Ministry of Education, Ministry of Labour and Employment, Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Planning, Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth Sciences, Department of Space and Department of Atomic Energy, Ministry of Parliamentary Affairs, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Ministry of Finance, Ministry of Labour and Employment, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Tourism, Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Textiles. Congress member Dr. Shashi Tharoor then read a statement related to the Standing Committee on External Affairs. It dealt with the action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 29th report of the Standing Committee on External Affairs, and also with the 24th report on the subject India's policy planning and role of think tanks, with special reference to ICWA and RIS, and a report relating to India's neighbourhood first policy. Rajiv Pratap Rudy then presented reports on
Standing Committee on Water Resources, which included the first and second reports on demands for grants of the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju then brought a motion to move that the House agrees with the sixth report of the Business Advisory Committee presented to the House on 7th of February 2025. The motion was passed taking a sense of the House. In the 0 hour that followed, members from different political parties then raised matters of urgent public importance. Dilip Saikia raised the issue of China building a dam on the Brahmaputra River, which can have adverse effect on the northeastern states, while Trivendra Singh Rawat raised the issue of flooding in the Ganges and its tributaries in Uttarakhand. Let us listen into some excerpts. अभी हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान किया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और चीन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम से बहकर बांग्लादेश पहुंचता है। चीन में इस नदी की यारलुंग जम्बू कहते हैं। तिब्बत में बनने जा रहे इस बांध का असर भारत और बांग्लादेश दोनों पर पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले इस बांध को तिब्बत पठार के पूर्वी छोर पर हिमालय की विशाल घाटी में बनाया जाना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद नज़दीक है और इस इलाका रिंग ऑफ फायर जोन में आता है। ऐसे में इस जगह इतना विशाल निर्माण करना पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। महोदय, इस इलाके में अक्सर भूकंप आते हैं। बांध के बनने से इकोसिस्टम पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जिससे कई हादसे हो सकती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश पहले से ही भयंकर बाढ़ की घटनाओं का सामना करते आ रहे हैं। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर इस बांध के निर्माण को रोकने के विषय में जरूरी कदम उठाने का कष्ट करे। मेरी सरकार से मांग है कि नदी गंगा नदी के किनारे और सोलानी नदियों के किनारे बैरिकेटिंग और तटबंध निर्माण कराए जाएं। ये बैरिकेड और दीवारें बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गंगा नदी में और सोलानी नदियों में बाढ़ के कारण तमाम मगरमच्छ और घड़ियाल एक गांव की बस्तियों में घुस जाते हैं और लोगों के जीवन को एक दूसरा खतरा उत्पन्न हो जाता है। हरिद्वार, खानपुर, लक्सर और रुड़की क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उक्त संरचनाओं का निर्माण बहुत जरूरी है, उसको किया जाए। The Lok Sabha then continued the general discussion on budget 2025-26. Let us listen into some excerpts of the discussion. आज मैं ये कह सकता हूं, आज अंधेरा छटा है, आपदा का बादल फटा है, दिल्ली के सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कमल खिला है, दिल्ली में कमल खिला है। यही नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी आपके ललाट पर आपका तिलक करने आए तो मुंह धोने ना चले जाएं, फटाफट अपना तिलक कराएं। और इसी तरह का अवसर किसी को गंवाना नहीं चाहिए। ऐसा ही मोदी सरकार ने अवसर दिया, जहां मां लक्ष्मी आप सबके द्वार आई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो आज तक संभव नहीं हुआ। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि 12 लाख तक जीरो टैक्स कर दिया है। और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, अब तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, पूरा देश खुश है भाई, आपको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा इंदिरा जी के समय क्या क्या होता था। आज भारत के 4 ग्रोथ इंजन तय हुए हैं, एग्रीकल्चर हो, एमएसएमई हो, इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपोर्ट हो। और हमने जो विकसित भारत के लिए लक्ष्य तय किए हैं माननीय सभापति जी, वो भी सन 2047 तक शून्य गरीबी होगी, गरीबों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी। वहीं पर 100% गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा और सस्ते दाम पर दी जाएगी। और वहीं पर श्रमिकों का कौशल विकास होगा और उचित उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। हमारे विकास की भागीदारी में महिलाओं को 70% उनका योगदान इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होगा। और हमारे किसानों के दम पर
भारत दुनिया की फूड बास्केट बनेगी, यानी कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड हम भारत को बनाकर दिखाएंगे। For any leader, without creating any wealth, we cannot do welfareism. So I know when I talk about it, they'll definitely cut this video and say, "Oh, Krishna spoke against the welfareism," but we are in favor of welfareism. But we want welfareism to be done after wealth creation. So as we are doing a debate across the nation, even in the Delhi elections, they have shown welfareism and development has to go together. So as the debate is going on with regards to one nation, one election, we want the debate to happen even on this side. Our Chief Minister now is clearly saying, let's have a debate across the nation saying no one has a right to do the welfareism without creating the wealth. So I hope this Finance Minister will take it up, sir. Coming to the departments, with regards to the railways, there is an increase of 9,400 crores, sir. Thank you to the Railway Minister, but we request the railway lines which are being stagnant because of land acquisition issues to be speeded up and completed, sir. There's an allocation of, for Narega, there's an allocation of 86,000 crores that has been allocated. I know this is a demand-driven. I'm sure you'll bring more funds to this in the supplementary demand for grants. Only request from Andhra Pradesh is to include handloom weavers and handicrafts in this. So they are saving this field, sir, for so many years. It's a family tradition that they're doing. So I hope this can be taken into consideration. बिहार के विकास को एक नई गति प्रदान करने में ये बजट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। कहीं हमने पढ़ा था कि द बी इन द बजट स्टैंड्स फॉर बिहार, और ये बात सत्य है कि आज बजट का बी बिहार के लिए, क्योंकि जब विपक्ष की सरकार थी तो बीमारों का बी बिहार के लिए होता था। हमने वो लंबा सफर तय करके आज एनडीए सरकार की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। पूरे विश्व को शून्य देने वाले आर्यभट्ट, जो पूरे विश्व को शून्य दिए थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था, और ये वही शून्य है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आई थी। और अगर आज बिहार को 2 शून्य अधिक मिल रहे हैं तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? On the commencement of the Rajya Sabha session on Monday, Chairman Jagdeep Dhankar extended birthday greetings to Sanjay Seth, a member of Rajya Sabha since 2016 from the Samajwadi Party. Seth has also served as the co-vice president of Uttar Pradesh Olympic Association. In the Rajya Sabha, papers related to various ministries were tabled, including those from the Ministry of Power, Ministry of Communications and Ministry of Parliamentary Affairs. Additionally, papers from the Ministry of Housing and Urban Affairs were also laid on the table of the Rajya Sabha. Sanjay Kumar Jha laid reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Water Resources. A copy each in English and Hindi was laid on the table of the Rajya Sabha. Kiran Chaudhary laid statements of the department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs in the Rajya Sabha. Copies of the report were presented in both English and Hindi by Dr. John Brittas. During 0 hour in the Rajya Sabha, members drew the government's attention to issues of public interest. Ajit Madhavrao Gopchade of the BJP raised concerns about the misuse of Aadhaar and creation of fake Aadhaar cards. TMC's Mohammad Nadimul Haq demanded the continuation of cricket commentary on All India Radio. BJP's Sujit Kumar urged for railway connectivity to remote areas of Odisha. Union Jal Shakti Minister C.R. Patil informed the Rajya Sabha on Monday that 12 crore toilets have been constructed across the country so far. Responding to a supplementary question during question hour, he stated that all applicants have been provided with toilet facilities. जो पहले 5 साल के अंदर 10 करोड़ टॉयलेट बने थे और दूसरे फेज के अंदर भी और 2 करोड़ टॉयलेट बनने के कारण अभी तक 12 करोड़ टॉयलेट बन चुके हैं। ये सिर्फ टॉयलेट बने नहीं है, पर इसके अंदर करीब लाभ लेने वाले जो बाहर शौच के लिए लोग जाते थे, उसके अंदर करीब 60 करोड़ लोगों को अभी शौच क्रिया के लिए बाहर जाने के बजाय टॉयलेट का उपयोग करने की आदत बनी है। टॉयलेट का उपयोग करने से स्वाभाविक रूप से ही स्वच्छता वो बन रही है और उसके अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा इसके साथ ये भी हुआ है। जो 3 महिलाओं ने, जो अभी 2 महिलाओं ने प्रश्न किए, उनको तीनों महिलाओं को मुझे कहना चाहूँगा कि अभियान के कारण जो महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरे की राह देखनी पड़ती थी, वो पूरी गंदगी अपने शरीर में रखनी पड़ती थी, उसके वजह से अपने शरीर में उनको
बीमारियां भी होती थी, वहाँ पर उसको मुक्ति मिली है। अंधेरे में जब वो शौच के लिए बाहर जाती थी तो उनकी सिक्योरिटी का भी प्रश्न आता था, वहाँ पर भी उनको फ़ायदा हुआ है। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इस स्वच्छता के कारण, इस अभियान के कारण करीब 3 लाख बच्चों की जान बची है, WHO का रिपोर्ट कह रहा है। तो इस तरह से जो इतना बड़ा काम, जो जान की कोई कीमत नहीं होती, एक स्वच्छता के कारण इतना बड़ा जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि ये सतत चलने वाला काम है, कंटिन्यू चलने वाला काम है। तो उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, उसके लिए हम राज्य सरकार के साथ मिलकर उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu, while responding to a question in the Rajya Sabha, said that the aviation sector in the country has witnessed significant progress over the last 10 years and holds great potential for further growth. The idea of the central government is to build as many airports as possible. The aspirations of India have changed after the coming of Narendra Modi ji's tenure as Prime Minister in the last 10 years. We have seen more and more airports being built up in this country, and with the establishment of Udan scheme also, the whole air travel system has been democratized, and more from the middle class and lower middle class have also become aspirational to fly using these air travel, sir. And regarding Jharkhand, any other proposal, if it comes from the state government that we regarding an airport, then definitely we'll look into it, sir. And Bokaro presently has connectivity to Patna and Kolkata. And if necessary in the future also, we'll see according to the infrastructure of the airport, if there is a demand to connect to other destinations, we'll speak to the airlines positively and try to connect those places also. Coal Minister G. Kishan Reddy, in response to a question in the Rajya Sabha, stated that coal mining operations starts working only after obtaining approval from the state government, the Forest Department and the Ministry of Environment. जो भी कोल माइन का माइनिंग के लिए हम परमिशन लेते हैं, उसमें पूरा फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं। जो भी माइन में जितने भी अगर कोई ट्रीज कट करना पड़ते हैं, उसका डबल हम पहला करके ही उसके बाद क्लियरेंस लेने के बाद भी कोल माइनिंग शुरू करते हैं। जिधर भी हो स्टेट गवर्नमेंट उसका देखभाल करती है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री देखभाल करती है। उनका गाइडलाइंस के आधार पर ही हम उनका क्लियरेंस होने के बाद भी माइनिंग शुरू करते हैं। उसका स्टेट गवर्नमेंट भी क्लियरेंस देती है। विदाउट स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस, विदाउट फॉरेस्ट क्लियरेंस, विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस हमारा एक कोल माइन भी शुरू नहीं करते हैं, उसके बाद ही करते हैं। The Protection of Interests in Aircraft Objects Bill 2025 was introduced in the Rajya Sabha on Monday. The bill seeks to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to aircraft equipment. It was signed in 2001 in Cape Town. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Kinjarapu Ram Mohan Naidu. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the bill be introduced. General discussion on the Union Budget 2025-26 began in the Rajya Sabha on Monday. Members from various parties shared their suggestions and views on its provisions. The ruling party described the budget 2025-26 as an exceptional one that meets the aspirations of the middle class and poorer section. Treasury benches expressed the budget balances the requirements of economic growth while addressing the needs of the weaker sections. On the other hand, the opposition accused the budget of ignoring the interests of the common man. Questioning the government's economic approach, they argued that mere tax exemptions are not sufficient. हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट का है अद्भुत काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति ने क्रांति लाई है। सभी भाषाओं को सम्मान मिलेगा। आज आप शोध सभी भाषाओं में कर सकते हैं। 14 से अधिक भाषाओं में आप परीक्षाएं दे सकते हैं। शिक्षा ने अभूतपूर्व काम किया है और गृह मंत्रालय ने एक लाइन खींची है। लोग कहते थे कि आप तो झूठा वादा करते हैं, लेकिन क्या हुआ? 70 साल की समस्या 70 मिनट में 1, 2, 3 हो गया और पता चला कि धारा 370 और 35 से गायब हो गया। आज कश्मीर में सुशासन है। आज कश्मीर अच्छा आगे बढ़ रहा है।
और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज रीजनल ट्रेन का युग है। हवाई अड्डे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, रेलवे, वाटरवे, हाईवे, बुलेट ट्रेन, सुधार हाईवे, ऐतिहासिक सुधार ये जो हाईवे में है, ये सारा कुछ एक अद्भुत दिखाई पड़ता है। नंबर 1, कॉरपोरेट टैक्स कम करने से एमएसएमईज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड का अवसर दिया जाएगा। नंबर 2, कंप्लायंस का जो बोझ है उस बोझ को घटाने से एक प्रकार से एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट अधिक मजबूत होगा। और वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, शी स्पोक अबाउट मेनी मेजर्स टू डीरेगुलेट इनएफिशिएंट regulations. I look forward to hearing from her in the months ahead what the finance ministry plans to do. और तीसरा, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके भारत मेक इन इंडिया को एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया में बदल दिया जाए। In our economy, especially for self-employed people, small tree growers play very, very important role, sir, because they are self-employed, sir. I humble request to the government, because we are getting all possible support from the government to look after small tree growers of our country, sir, because they are self-made, they are self-employed. If they get some justice, some help from the government of India, our tree industry will go better, go more better. Our small tree industry will go very important in. Again, I salute Nirmala Sitaramji, Honorable Prime Minister ji, for given 12+ income tax reduction to the people of Assam. अच्छे स्तर की शिक्षा ये एजेंडा है, सस्ती बेहतरीन सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था ये एजेंडा है, 100% कुशल कामगार और सार्थक रोजगार ये थीम है। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं समाविष्ट हो ये थीम है। हमारा देश फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बने, इसलिए किसानों को सक्षम करना चाहिए ये थीम है। डेवलपमेंट में तेजी, मध्यम वर्ग की क्षमता को बढ़ाने में मदद, समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना और परिवारों के मनोबल को उल्लसित करना। मतलब इतने अच्छे थीम पर कोई भी योजना हो, कोई भी बजट डाला हो, कोई भी प्रावधान हो, सबके लिए ये थीम है। That's all in House Highlights for the day. Keep watching Sansad TV. Goodbye and good night.